All right, what'd you break? Say the word, kid. That's it? Brock, what do you know about the serpent in the lake? I know he's too damn big. All right. Hey, whatever helps, right? Next time, I guess. Ed, you are full of stories. When will you tell one of your tales? I beg your pardon? He just insulted you. Yeah, I got that. So you want a corker, do you? Very well, my brothers. I'll tell you the story of Hrungnir, the brawler. The real story. There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle, fighting off Ace. A pretty story, but no. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart. So the giants had to complete him with stone. He was strong, to be sure, but also a perfect simpleton. Well, I can just tell you this story later. Seen one of those before. They look like they walked straight out of hell. It's a fragment of a language cipher. We should look for more like this. Ah, Fafnir. I always wondered what became of him. Wait, Fafnir? Like, Fafnir's storeroom Fafnir?
The very one. But Sindri said he was a dwarf. He was. And now he's a dragon. Funny how life works, isn't it? He's chained up. Perhaps we should keep an eye out for binding shrines and free the poor bastard. Aye, lads? How did your friend become a dragon, Mimir? Oh, he's no friend of mine. This little scrote was a constant source of annoyance amongst Aesir and Vanir alike. Then why free him? Trust the recently liberated brother. No one deserves to be held captive like this. Dwarf come dragon. What's the question then? How did this dwarf become a dragon? Don't know for certain, though I'd wager his penchant for stealing magical artifacts had something to do with it. Must have stolen a trinket from the wrong Vanir goddess. Since we last crossed paths, I had legs. Driving in behind you, brother! Well done!
go, you wee little bugger. Well, the dragon hasn't done much for his personality. Boy, over here. This is good to know. I do? You did well. Look here. Sir. Hey, it's another treasure map.
Another name. Air! It's the name of one of the Valkyries. That's quite curious. I have a favor to ask. Do you remember the dagger you gave me? The dagger stabbed into the Reaver's back? His own son killed him? Yeah, I haven't forgotten that one. Well, I traced it to a group of Reavers that operate out of the Northree stronghold. I'd wager that's where they took their haul from Fafnir's storeroom, along with that whetstone that I could use to help you. Another treasure hunt? Pointless. Well, not if Sindri really can make us better equipment with that whetstone. Plus, the Reaver's son. He murdered his father. Let's get started then. Yes, my young man? You don't need to make excuses to say hello. What is this place? Could it be? The Eight Thrones. Stop being coy-head. Do you know this place or not? Mimir, the smartest man alive. I know many things. Well, whatever this place is, it looks important. True. There is little of value here.
Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic, after all. Mimir, you were in the middle of a story before. Was I? Oh yes! The real story of Hrungnir the Brawler, a giant with head and heart of stone. Odin met him wandering in Midgard one day. Found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. There he gives Hrungnir his fill of mead, and goads him into all manner of boasts and antics, all for the amusement of the court. I was there. I saw the Aesir laugh as Hrungnir leapt upon his shield and swore he'd kill us all and take our womenfolk back to Jotunheim. Then Thor shows up. Does he laugh? Oh no. Thor takes one look at the drunken stone buffoon, brings down Mjolnir on his head so hard that he's got chunks of Hrungnir in his own skull to this day. Thor is so startled by the face full of rock, he doesn't notice Hrungnir's body topple right onto him with a sickening crunch. And again, the roars of laughter echo through the palace halls. That's an awful story, Mimir. Nothing like the ones Mother told me. Let that be a lesson, my son. Truth is seldom so pretty as myth and legend. Wow, it's like there was an entire city under the water. Aye, lad. A forgotten city. What was it called? Well, I forgot. We could dock the boat here. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic, after all. I'm feeling creative today. Well, don't buy anything on my account.
I still can't believe a son would kill his own father. That's crazy, right? I know, we only got one side of the story. But come on, his own father? I mean, I get angry at you sometimes, but... Do you? I mean, sometimes, yeah. A little. But I'd never stab you in the back. No. I imagine. This clan really didn't want anyone coming in. How are we supposed to get through? There must be a way to lift the gate. Maybe with the big water wheel. My thought as well.
When are you angry? What? With me. When? Oh. I guess... sometimes when you don't think I can do something, but I can. It is not always easy to know It's what... okay. I get it. I'm little. Where's that whetstone, I wonder? Looks like we got them all. Wow. Boy. Yes, sir. Another month.
happened over there? This is the sun. That ghost son? How do you know? The sigil. It matches the dagger we found in his father's back. He stood his ground, but it was not enough. They betrayed him. Betrayal begets betrayal. My guess, the young one murdering his dad didn't sit well with the others. He thought himself ready to lead. It cost him his life. I guess. Look there, lad. By his feet. The whetstone! Yes. They used it to smash his face in. They did? Ew. If Sindri wants it, it must be really useful. Well, lad, reavers have very specific priorities. If it's not shiny and you can't eat or drink it, you might as well use it as a blunt object.
Nicely done. This says, false leader. I've seen it written all over this place. Boy, Yes, sir. Another map. Great. boy, over here. Sir. There's a scroll here. It belonged to the sun. Wow, this goes on and on. Father, forgive me, filled with remorse, forget my actions. Had he thought before taking action, there would be no need for regret. Yeah. Maybe we should bring this to his father, back at the storeroom. What's that down there? We could dock the boat here. I see something down there. I have a question. If Ymir was the first giant, where did he come from? And we'll pick this up How did it later. go at the stronghold? We found your whetstone. Oh, wonderful! This staining is unusual. The Reavers used it to smash another Reaver's face in. Oh, wonderful. Here, for your trouble.
I can't wait to test out the new whetstone. It may not look like much, but it's practically humming with magic. I've needed a new one after my brother borrowed the last one. I saw him spit on it. So move it out! He said, I didn't ask for it back. Lumir, can you start that story again from before? If I recall, we had begun to discuss the origin of Ymir, the first giant. In the beginning, there was Ganungagok, the Great Void. There were no realms yet, only primordial forces. There was fire, and there was ice. And there in the void they met and produced Water? more than water. The mystic lifeblood of something entirely new. From this water, Ymir took form and became a being of pure creation and chaos, mother and father to all that came after. Even the Aesir? Aye. Every god, man, and beast came first from Ymir's flesh. Though it was the Aesir who thought themselves so superior that they should hold dominion over the rest of creation. It was Odin who took arms against his creator and spilled Ymir's lifeblood with his spear. A necessary evil, he would say, to bring order to the realms. In Ymir's torn flesh, Odin would fashion the realm of Midgard for his own. Called himself All-Father, as if he was the creator, not creator-destroyer. Snob, covetous, tyrant. Lumir? Huh? Oh, sorry, boy. I think it best we just end it there, actually. We could beach the boat here. I wish Mom were here.
Which way? What are you? We found your son. He was betrayed too. And we found part of his journal. It sounded like he regretted killing you. Fat lot of good that does me. How'd he go out? He die fighting? We found 4 corpses near his. They were decapitated. Ha! Vandrit always did keep his sword nice and sharp. A lesson he picked up from me. He's a backstabbing bastard, but knowing he's in Valhalla sets me at ease. Thanks. We did a good thing. I'm glad we came back here. That thief did not deserve the peace you gave him. Maybe so. Still, it feels good to help people. Even the dead ones. So much like your mother. Hey, Sindri. Have you met Mimir? If you mean the severed head that keeps blinking at me, please, keep it away. There is no possible way that's hygienic. Oh, that's nice. Lovely to see you too, Sindri. Knob. So, Mimir. Seemed like maybe you know Brock and Sindri. Oh, the Huldra brothers. Well, who doesn't? They're quite famous, or infamous, depending on your point of view. They crafted Mjolnir, you see. Thor's hammer, the Aesir's greatest murder weapon, the bane of giant kind. They made Thor's hammer? I didn't think they'd like the Aesir. Oh, I should say not. But this was long ago, and they were eager to make a name for themselves. Rather overdid it with that one, methinks. Mimir, what can you tell me about that giant lady with the bow? She was called Skadi, Queen of the Hunt. Her father was Thiotzi,
who could take the shape of any wild creature and taught Skadi how to hunt them all. From the ribs of pack beasts, she fashioned second feet, allowing her to glide upon the snow so no animal could evade her. Or I can just tell you the story later. Ulvik. You were taken from this realm too early. You who walks among the living! My beloved Gulvig calls to me. She yearns for peace, yet her remains lie in pieces. I beg of you, make my Gulvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy, I can smell your grief, child. Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death. If only for a short while. boy, we are leaving. They've taken 3 of Sweet Gulvig's bones and spread them across the lake. So, if you remember, I started a doozy of a story earlier. It was about Skadi, queen of the hunt. You know what? I'll tell this one later. These bones pulse with magic. It must be Golvi. Could we just hold on to it? Maybe we'll find the rest of them. This spirit lies to you, boy. How do you know? I have known many spirits. They are all liars. This one is different. I know it. You know very little. So, if you remember, I started a doozy of a story earlier. It's about Skadi, queen of the hunt. She became a huntress beyond compare, even to any god. Odin himself wanted her for his bride, believing she would bear him strong sons. But she spurned his affections, and for that insult, Odin vowed revenge. It was put forth that the Aesir were plagued by an eagle who would steal the precious golden apples of Idun. Not even the finest archer among the gods could bring it down. You know what? I'll tell this one later. You are more focused.
I'm not ready! Switching arrows! Well, that solves that treasure map.
It is over.
Trusting the spirit to keep its word is foolish, boy. But if there's even a chance, don't you want to see Mom again? Of course I... She is gone, Atreus. You must accept this. I do, but to see her again. Just one more time. Why do you believe him? You do not know him or who he was. All of this is sinister. He wants to see someone he loved again. I understand how that feels. I don't think there's anything sinister about it. It's blinding your instincts, boy. Another piece of the language cipher. Good. Boy, Yes, sir. Another map. Bet we'll find something useful here. Golvik's bones. what will you say to her? To Golvik? Your mother? What have you left unsaid? I guess... I just want to know if she's okay. She is dead, boy. I know that. You don't understand. What would you say to mine? Nothing. Nothing? There is nothing left to say. What about everything we've done so far? That man coming to the house? Talking to the... World Serpent? We've done so many amazing things. I just want to tell her about them. Don't you? What else would you say to her? I tell her that we're both okay. Not to worry about us. Atreus, I miss her too. You know this. I thought I knew very little. Mimir, you were in the middle of a story before. Was I? Oh, yes! Seeking revenge on Skadi the Hunters, Odin spread rumors that Aesir were plagued by an eagle. You know what? I'll tell this one. Bothar. Grim. Eric. Are you okay? No, son. My goods
are underwater. My men are drowned, and yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. They plague these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. The thunderstorm scattered all 3 of my ships across the lake. I know not what I did to anger Thor. But his judgment was swift and brutal. Boy, over here. Yes, sir. It's another one of those maps. The final bone. Yeah. We might as well return them to the spirit. Maybe he will keep his word. I know she's not coming back, okay? I know. I just... Never mind. Let's just go return the bones. A dangerous beast. We will take him down together. Atreus, follow me. Be right there. Ugh.
I've discovered opportunities for hunting and trade in these lands. I gave up my search for Jotunheim long. I felt blessed to lead such a loyal crew. I wonder why Goofy's bones are all over the place. Desecration, typically. Pieces of scattered corpse make for a piss-poor soul. No hope for Valhalla or Helheim when your arm's on one beach and your head's on another. Why not ask the spirit? I'm sure he will be forthcoming with answers. Mimir, you were in the middle of a story before. Was I? Oh yes! Seeking revenge on Skadi the Huntress, Odin spread rumors that Aesir were plagued by an eagle. Odin knew that Skadi could not resist the temptation to prove herself superior, and so she joined the hunt. Skadi tracked the eagle as it flew where she alone could glide, and loosed an arrow from her unerring bow. When she pointed her bow, she found no eagle at all, but her own father, poor Thiotzi, slain by his own daughter. She was overcome with grief and shame, for there is nothing nature so reviles as a child who kills their parent. Skadi succumbed to her fate as winter's blanket fell, holding her father as the mountain held her in an embrace to last eternity. Well, that was sad. Aye. There aren't many happy endings for the giants, I'm afraid. I see something down there. Tears, braziers. Were all those guys part of his crew? That's a tough crew. And all were his responsibility. That's a lot of responsibility. Does it frighten you? Responsibility. Oh, no. I don't think so. I mean, I think it used to, but not as much anymore. Why is that? Well, being out here with you makes me feel more grown up. We've seen these runes before, but it's the kind I still can't read. Almost. If we could just find the other pieces of the language disc.
dock on this beach? Seriously, how did this one captain lead so many men? He had their loyalty, so they followed. And then they all died. He must have been a bad leader. Why do you think that? Well, he led all these men to their deaths. True. These men chose to follow. Even good leaders make poor choices. The best take responsibility for them. Remember this. Boy, over here. Sir. Wonder who wrote this.
tough. I can't translate this without the whole cipher. Getting a letter here and there, but we need the rest of the language disk. I can't translate this without the whole cipher. Father, were you ever a leader? Many years ago, yes. I led men in battle. Were you a good leader? It is complicated. Did you no ever... more questions, boy. Focus on the task at hand. Yes, sir.
Focus up, boy. Enemy!
That was the last ship. I hope the captain will be satisfied now. Unlikely. He's determined to put these men to rest himself. But he would have never been able to. That does not matter to him. Our victory will only remind him of his failure. Then, why do we do this? Boy, over here. Yes, sir. Treasure map. All right. Father, why did you really want to help the spirit? You need the experience. I've had plenty of experience fighting these things. What's the real reason? This man inspired loyalty. He took responsibility for his mistakes, and he was determined to fix them. These are good lessons for you. Oh, Yes. Oh. that's some statue. Who built it, you think? I do not know. Nightmare! Fire! Incoming! I'm ready! One more and we can translate those Niflheim runes.
Look here. Another. This one is Thrym, a frost giant king. Correct. A cunning one as well. Is that Mjolnir? Did he steal Thor's hammer? Aye, for a time. A lot of these seem to end before killing them. Imagine that. Need more time! We're almost through! Watch out, Hit yet! How was that? Better. Another name. Carl! Another Valkyrie. That's no coincidence. But who'd have etched them on Tyr's braziers?
going down there? Lemire, why don't you tell us the story of the giant that stole Thor's hammer? Happily, my boy. It involves your friend Freya, too, though I don't expect it's one she'd enjoy being reminded of. The giant was called Thrym, and he proved cunning enough to make off with Mjolnir while the Thunder Lummox slept. Sadly for Thrym, he didn't always think with his brain. Though he had robbed the greatest giant killer of his greatest weapon, he offered to trade it back to the Aesir in exchange for Freya as his bride. That's right. We laid them all to rest. I see. So even in death, I am a failure. But in life you were honorable, strong-willed, and you inspired loyalty. These are good qualities, aren't they, boy? Yeah. I couldn't believe how many men followed you here. I thank you for your kind words. May your journey have a more pleasant end than mine. Well, you're right. You didn't seem very satisfied. I guess you never really get over losing ones you care about. Never. Right then, where were we? Ah yes. Thrym the Cunning stole Thor's hammer, and ill-advisedly offered to trade it for Freya's hand in marriage. Now, at this point, Freya was married to Odin, and Odin, frankly, would have traded her for a sufficiently strong need, but he saw an opportunity here. Thrym's palace was in Jotunheim, and only giants know the way. By agreeing to the marriage, they'd have to escort Freya back to their realm. So, Odin coerced Freya into using her Seithar magics to conceal Thor, so he could sneak along with her and infiltrate Jotunheim. When the hammer was produced as the wedding dowry, Thor revealed himself. He took back Mjolnir and wasted no time in smashing Thrym's skull, followed by every other giant present for the festivities. You know what? I'll tell this one later. We have collected the rest of your woman's corpse spirit. Show us this magic you have promised. My sweet Gulvig. Whole again. Rise, dear Gulvig. Awaken, oh powerful Gulvig! Evni bukar bitjast. She says she'll honor our request. Eldi fagnar. And reunite us? Okay, You're right. Say it. I told you so. I told you so. You are naive, foolish boy. This is true as well. But do not take your disappointment out on me, boy. Take it as a lesson. Yes, sir. Good. The special chisel is ahead past this gate.
Mimir, can you finish that story real quick? The wedding of Freya and Thrym the Cunning was interrupted when Thor recovered his hammer and commenced a slaughter of legendary proportions. You know what? I'll tell this one later. Hang on. Mimir, you called Brock and Sindri the Holger brothers? Aye. But they're dwarves, aren't they? Aye. And Holger are sprites of the forest. Aye. Beautiful, seductive sprites of the forest. So why would you call Brock and Sindri the Holger brothers? Oh, well, I now realize this would be a wholly inappropriate story for young and innocent ears. Whatever. Come on in, then. So much for peace and quiet. What you need, kid? Shoot your old man now, or me. You think what you want? Got some cleaving ahead of you. Think of me next time you're chopping someone in half. Now there's something else. So what'd you find out there? Hope you got what you wanted. Where were we on that other thing? To work it is. Yeah, boy? Oh, you make up your mind?
Next time, I guess. I see something down there. Mimir, can you finish that story real quick? The wedding of Freya and Thrym the Cunning was interrupted when Thor recovered his hammer and commenced a slaughter of legendary proportions. The only thing that put a stop to it was Freya, who wanted no part of this massacre. She cast a powerful spell that hurtled them both out of Jotunheim with no means of return. Odin was livid, hoping that Thor's foothold in Jotunheim would become his own. Would he ever revenge himself upon Freya? What is the point of this story, Head? I'll tell this one later. Why? Is that a piece of my braided mistletoe arrow adorning your quiver strap? Oh, a little memento of your good pal Sindri? I'm so terribly touched. So, I heard you and Brock are kind of famous. Well, you're half right. Whatever did you hear? That you made Thor's hammer. Oh. Yes, we did do that. Mjolnir put us on the map. It was a legendary run, got it? Boy, Nice to have an easy fight every once in a while. Well, that solves that trouble, huh?
wondering, why don't you just make up with your brother already? Me? Make up with him? Because he's an obstinate pighead incapable of change. Because he says the most terrible things about me, just because he's insecure about his own work, which, let me tell you, is subpar. He blames me for... Come. Right behind you. Let's see, from the cunning. Where were we? You are coming to the point. Ah, yes. Well, for Thrym, the lesson would be to keep his priorities straight. For Freya, it's that doing good has a price. For Thor, it's that no object of power makes you what you are. And if what you are is the biggest butchering bastard in the Nine Realms, nobody can take that away from you. We can beach over here. Need more time! Almost there! I'm ready! I think I'm getting the hang of this. Getting a letter here and there, but we need the rest of the language disc. Almost. If we could just find the other pieces of the language disc.
can't translate this without the whole cipher. Almost. If we could just find the other pieces of the language disc. What's that down there? You want to dock here?
What happened to the city? I'm not entirely sure, lad. It was abandoned long before Jormungandr came to town and flooded the place. I wonder what it was like to live here. Atreus, to me. Okay, I'm coming. Well, that solves that trick, huh? Another name. Deirdre. It's as if they'd been made into a memorial to the Valkyries.
This is where the tower to Jotunheim should be. Feels strange somehow. No doubt some arcane magics were involved. I would be not at all surprised to learn you were sensitive to that. We're not in Vanaheim right now, even though we're walking through the Vanaheim Tower. Correct. We are still in Midgard. This tower is just a mirror of an identical tower in Vanaheim that exists in this same spot. Here in Midgard, just simple. We would need to use a round travel map to get to Vanaheim. Confused. Works at all. हमारे आदमियों की हालत बहुत खराब है। आपको तो ऐसा नहीं लगता कौन है ये कमीना तो बताओ नाम के लिए करना के बात कर आप कानून करेक्शन इसको ढूंढ लो पुलिस को भर वो बात और तो उसके सब इसलिए हमारे पास रोटियों के पनीर आप हमारी जाति के लोगों आपकी तारीफ है बात मत करो जोयम कुछ कानून के फैसले को और मैंने सब अपना हाथ भूल गया हमने कुर्सी दिलवाई और हम पर लाठीचार्ज करवाया उसका पिल्ला है ये सरकार बदलवा सकता हूँ मैं उस समय में स्थिति को सक्षम कर और मुझे रिपोर्ट कर करना प्रोग्राम बन गया उस बात की खबर देखी तो नहीं देखी फोटो ऑनलाइन भिजवा दीजिए फोटो ऑनलाइन भिजवा दीजिए फोटो कॉपी ऑनलाइन भिजवा दीजिए। अभी टाइम शाम हो गया हम कल सुबह 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे दुकान पर आइए आज में देने तो कुछ अलग बात होता है ना इसलिए सब बोल हमारा फोटो खींचेंगे होगा उसका Fire round. Was the gauntlet of the sewer. Like a magic glove? Or a series of dangers. We should go see sometime. हाँ ये क्लियर रहता है
और जब वहां से भी आएगा पैसा बैंक में तो उसमें भी कमीशन कट के आएगा। तो सब बता दिए, ये मत कहिएगा ऐसे नहीं है, समझे? उसको बताना कितना कटेगा। क्या हुआ यहाँ क्या कर रहे हो? चला नहीं है क्या? पाँच सौ लोगों को लगाना चाहती हूँ। ये तो फैन की आवाज है, उसकी आवाज कितनी रोमांटिक है ना। चलो हम उसकी जैसी आवाज निकालते हैं, अगर हमारी आवाज उसको पसंद आई है तो वो जवाब देगी। क्या ऐसा क्या? हाँ जस्ट करके बताती हूँ। अब तू कर चल ना। देखकर ही कहा था ना। मेरी आवाज तुम्हें पसंद आई? I love you. This chisel we see, what is it? I'm glad you asked, actually. I have just the story. There was a giant once named Family. A very giant, who, despite his mountainous size, was without question the greatest stonemason this world had ever seen. Proud Family hoped to one day pass his vast knowledge on to his son. But young Grimthor had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, and the son too little. Either way, quarrel there spiraled out of control, and the overworked stonemason struck his son. Grimthor ran off into the night, feeling shame and regret. Famor chased after his son, but in his emotional state soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly, he caught the eye of one person who didn't want to meet alone that night. So far, you'll see. पागल, सब तेरी वजह से हुआ। Aye. Famor fell, crushed her charming place, famed for worshipping the Vanir god Njord. Always took credit for planning that one. Truth is, the circuit callback just got
Focus up. I'm not ready. We see control. The tip of one, yes. A very, very giant. Nothing seems to do anything. कितना बजे फ्रेम देख रहा है
मिला लो सेव हो जाएगा अभी 4 नहीं बज रहा Oh, neat trick. His idea. अभी नहीं बन पाएगा 1 घंटा टाइम लेगा बनाने में भरने में आनने में लगाने में टाइम लेगा आपको नहीं बनाना जबरदस्ती बहुत है What happened to the survivors? Thamur was a frost giant. When he died, his final breath froze everything. Someone to get through this one. भाई घर में पैसा भी दे तो सामान तुमको फिर मुंह से बोलना आ जाना चाहिए Atreus, here! Yes, fathers. There he is. Find the tip of that chisel. That's the magic we need. बड़ी जिद खोल रखा है तो नंबर का बोल रही है 1 घंटा 1.5 घंटा सेव लेगा तो अभी बना के दे I'm set. ये कि काम लगा के देना नहीं ऐसा बना दो ये लगा Keep it up! An all-fine light crystal. Wonder what it's for. Can you read it? Sir. To Njord, we offer back the sea's power. Ah, yes. It was believed that Njord calmed the winds and seas for the fishermen. For that, they loved and worshipped him here. Hey, Arden rolled this out. That's handy.
How are we getting down there? I have a plan. You do? Do not act so surprised. Oh, no offense, brother, but I don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor is a fool. This should be entertaining. Boy. Right.
Wow, that was something, that fight. Here, catch. Well, that was a waste of a perfectly good apple. How were you not seen? There is nowhere here to hide. Oh, that. It's a little trick my people can pull. A special way of not being seen. You can be invisible? More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, so it sees nothing at all. That's how we avoid ever having to actually use the weapons we craft. It doesn't seem to work on dragons, though. Your brother wanted to know if you're getting enough to eat. I guess I could tell him you are. Brock was asking about me? Was there meat on his breath? You let him touch this again. Come on, then. So that's how Brock was in the temple right after the water broke. He stepped between realms. Okay, now, shush. I need complete silence for this. There you go. Let's get to it. Let's get started. How about you, young one? What else was there? So, this plan of yours. Can you guess it? Knowing you, it doesn't involve standing around here. Correct. But how do we move forward? Careful! Boy, my shop's Armor right really here! Driller, didn't he? Even braided his beard with it. I happen to think he looks dashing. You know, for a snow-covered corpse. We heading into that building? Yes. Think there's something inside that'll help us break the ice and get to the chisel tip? No. I'll keep thinking. Be ready! Come here. You knew this place? Before? I came here on a diplomatic mission once, trying to broker a peace between Asgard and Vanaheim. That war. So many lives lost.
What I didn't know was Thor had already gone on a killing spree of giants. What did the giants have to do with Nothing at all, lad. That's the tragedy of it. They took no side in that madness. But Odin's paranoia is surpassed only by Thor's lust for blood. Another crystal. Just give the word. Ooh, you got most of it. Well, a stealthy plan it is not. Now we must free the other strap. You do? Why are we going up when what we need is all the way down there? Think. Well, the chisel tip is under thick layers of ice, so melting it won't work. Correct. And there weren't any shattered crystals nearby for me to shoot, so that's not an option. Correct. That just leaves smashing the ice. We need something ridiculously heavy to... Oh, I get it now. Good. How are we going to turn the hammer so it lands near the chisel tip? Not possible. We cut it free, write it down, and figure out what comes next after. So your plan involves a whole bunch of luck. You are welcome to suggest a different one. What now? Hold tight. This plan seems ill-advised. Quiet head. Jump! That didn't work. It only fell a little ways.
get to it. Cannot. What does it say? When time itself is discerned, the forward path is retrograde. Retrograde? It's backwards? Those symbols. The seasons? Shouldn't it be winter, spring, summer? Why start with winter? Oh, I know that one. Winter! Quiet, head. Doesn't like music either. Got it. Do it. House, Sumo, Fox, Veteran. Yes. Atreus, that word. Thorna. It means endure. Try it. Thorna. Well done, lad. Write it again. Thorna. Horizon! The energy's lifting the platform. Keep writing. Thorna. 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 Head, how is this possible? I guess temporal magic. Dangerous stuff the High Vanir gods used to play around with. The ability to freeze time. Happened to be a favorite of Njord himself, in fact. Used to. Why did they stop? Well, turns out stopping time keeps the sun and moon from streaking across the sky. Unfortunately, it does not stop the wolves that chase them, all looking to sink their teeth in. After that, they decided it was best to leave time alone. I can't get to the bull! Back to writing, before the floor collapses. Nice shot. It's halfway empty.
did well. Thanks. The boy. Just having a little fun, you big grump. Well, there it is. How are we going to get it free? A push. But Trust me. Ready. Dig in and push with everything. yes, sir. How do we get down? We jump. Really? Come. Do not panic. Why would I panic? I have you. You're cracked, you know that? Well. Good. We should keep moving. The chisel tip. Give the man credit. He has a talent for destroying things. Remember that head. Never leaves my mind. Father. Not now. Those were the guys we saw with Baldur. His nephews? Aye. Magni and Modi. The sons of Thor. Mother always said the Aesir were the worst of gods, and Thor was the worst of the Aesir. Guess he's a terrible father, too. They are no longer children. They have no excuse. Will Sindri be okay? Never even. Be okay? Never even see him. Ah, the great dining hall. Envy of all Midgard. Remember them. You just can't help but break things, can you? Memory serves. Young. The other side of that wall of ice.
I can see a path out. There's no way to reach it. How'd I do? Your skill continues to grow. Okay, here we go. Something ahead. See, lad, he's fine. Thought it best to vanish when Thor's idiot sons showed up. Will you focus on your I mean it. Let's get started then. Away. Maybe. Uncle hasn't seen straight in years. As long as father believes him. So you will stop talking, focus, and help me. Keep looking. That looks amazing. Wear it in good health. What else was there? Those men, what do you know of them? First, they're not men, they're gods. Well, demigods. Anyway, let's see. Thor's their dad, different moms, sordid story that one. Baldur's their uncle, Odin, dear old grandpa. Oh, and a sister named... Weapons. How do they fight? Oh, of course. Magni's strong. Really strong. Carries a huge sword hardened by cyclonic thunder. And Modi? Ugh. Sooner lick a rat than shake that dung heap's hand. His mace and shields are just a cheap knockoff of my elegant work on their dad's hammer. Best to follow my lead and avoid, but who am I talking to?
Hurry, brother. We may get a piece of the chisel and be gone before they even notice. Uh-oh. Yeah. Boy. Surrender. The All-Father demands it. No. Good. This fight is mine, boy. Go. And where do you think you're going? Oh no, brother. The little freak's got a bow. What are we gonna do? So what's yours, brother? Don't tell me. I'll take the rope. I can't remember the last time we faced an extra challenge. Call this an old man in this stillborn Unbelievable. You mean to oppose the right of us? You got some father, kid. Stay behind me, boy. Why do you hunt us? What does Odin want? Hold on. Don't get it. Come here. Daddy's hand. Shut up! Don't call me that! Can't believe you lasted this long. Those skinny logs can barely. I said shut up! Calm yourself, boy. Looks like they need another lesson. Plans for you, kid. I bet Daddy's embarrassed I can track you around. Shut it out. Focus. Your mother ugly or something. She cut up your face and you look at her. Don't talk about my mother! Don't talk about my mom. Don't listen to him, lad. He's trying to rile you up. Idiots. The sons of Thor are welcome to try. Head! Sorry, overstepped, yeah? Gonna drive your carcass to Asgard. Come on, put up a fight. We're coming for you. Wow, you're pathetic. There's a little rush for his mom. Stop it! Boy, stay focused.
Well, kids, that must have been some war to lay with the last embers. I'll kill you! Troya! Troya! How did you... You have no idea. You son of a bitch! Sickness. Fever has returned. No! It hasn't. Roy, The coughing, the blood. The boy's sick, he needs Freya. No! steady. I'll be alright. There you go, lad. I'm fine, see? We should keep an eye on him. Enough? Should do. With that, we can carve the travel room to Jotunheim. Get you where you need to go. Oh, incidentally, all those magically sealed doors we've seen can now be unlocked. Like that one round the corner. You can get through that door there now that you've got the chisel. You killed Magnus. That he did. He was a god. But you killed him. Minor Aesir, perhaps. But aye, And his father's Thor. not minor. Not minor at all, him. This will not go over well in Asgard. I defended us. Nothing more. I fear no judgment. Judgment, no. But if vengeance is any concern, Since when can you kill a god? We could try through here?
bad. Hey! Did you hear? Magni, the Aesir god, son of Thor, dead! I know! Now Modi's on a rampage across Midgard, looking for the killer, swearing that once he finds him, he'll... Oh, shit, that was... We should probably discuss it more quietly. Or not at all. I think that's a great plan. Wait, no, yes, come in. Probably shouldn't let my brother lay hands on it again, but if he does, tell him to temper his steel longer. He's warping the bit work. Anything you need, young sir. Was there more? Let me think. I don't think the lad's doing too well. Slow and keep up. Yes, sir. Hey, I just realized. Magni didn't come back to life. That is interesting. It's known the Aesir find their own way to Valhalla. No Valkyrie escort, no processing at the gates of Helheim. That may be significant. Look, back near the giant's head. What? What is this place? Someone would bring the day's catch into this port and use that contraption to send some of it directly to the Jarl's main kitchen. The rest was sorted and sold. There is an exit under the thumb. Find a way across. There's a path to the exit on the other side. गरम गरम है बेटा There's a rope up here. I think that did it.
गोल कर तो जाना गोल कर ना सीधा तो वाला पड़ेगा पैसा नहीं है तेल का तेल में गाड़ी लग रहा है देख लीजिए Back under his palm. We're almost there. Everything we just did. Climbed around a dead giant, rode a giant falling hammer, fought some bad gods. What do you think Mother would say? Bet you have come a long way. Thanks. Father, over there! Here, boy. Another one. Ah, you know this one, don't you? It's Thamu, the giant stonemason. Boy. Okay. Wait. It feels like a prison. That would explain the hefty magical lock on the outside. But it's more than that. I have this feeling like something is waiting for us down here. You've a knack for ominous statements, lad. What kind of something? I'm not sure. Something powerful. Whatever you feel, boy, we will handle it. We have come this far, yes? Yes, Father. ऐसा नहीं तुम यहाँ पर आए हो इसकी जानकारी उस तक पहुँच चुकी है तो क्यों नहीं है तुम लेकर चिंता मत करो मुझसे जो होगा बेहतर तो ठीक कर रहे आपके बारे में वैसे अपने बेटे के बारे में कुछ सोचा He does not उसकी जिम्मेदारी तुम पर ही है तो उसको अच्छा लड़का मिल जाए मेरे साथ तुम खर्च माफ कीजिए अभी उनके साथ आया हूँ फिर देखिए होगा और बताइए हमें किसी कल मुझे मोटी है इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी दादी सासू क्या बना रही हो दादी नाश्ता बना रही हो नाश्ता बना रही हो सांभर भी डालो ना जहर भी डालो ताकि कुछ छुटकारा मिल जाए सुबह की गली
मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ओ हत्यारा, लड़की देखने गया था तो आँख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा। तो इस हाथे की बोरी को हमारी गर्दन से रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। मेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए। पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला गया? इन्होंने मुझसे कहा 6 months में समझ जाएगी। पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे बदले की राह देखा है, मेरे खाया भले ही आप लड़ाई झगड़ा करके आए पर नजर तो ऐसे उतारती है किसी जंग जीत के आया हो। नहीं तो वो कद्दू के तेरे दिल छोड़ देगी। मेरे बड़ी बेटी की औलाद मैं दुनिया दुनिया से अपना बेटा मानती। इसके प्यार में कमी ना रह जाए इसलिए अपनी औलाद में बोल देती। एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है। और तुम केस तो ले लेती, लेकिन अदालत में केस न लड़ता। बाहर केस से लड़वाकर नहीं, केस थोड़ा अच्छे था। कल तुमने कॉन्ट्रैक्टर को मारा, जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। फिर तो नहीं शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप मेरे सब सुनते हैं लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं। आप खिलाड़ी को मोटा हो जाए। क्या हुआ? क्या बताऊँ क्या हुआ? इसे आगे करने को कहा तो मना कर, ये करने को कहा तो कहने लगा भाई खाते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर मैंने कहा लॉय करने को किया तो वो भी नहीं कर पाया। वो तो मेरे ये नहीं मान लिया और ये मिलिट्री में गया। वहाँ कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन होने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी मिलिट्री बाहर की दुश्मनों से लड़ा, लेकिन दिल से किसी को तुमसे ठीक कर तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आ गया बिल्कुल सही समय पर आए। 10 सालों से तमाशा 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तो भी बुरा नहीं बन पाएगा। पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसे इसका हाल है। एग्जाम हॉल में किताबें पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। तुम्हार उससे मट्टी न बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। नेगल बाबा का सौतेला चेहरा, इसीलिए सबकी खबर रखता। सच की डकार अपने आप ही जलाती। यूं कर दी Sounds pretty important. इसे नकार मत करिए, उसे बुरा लगेगा। बात में जब सच में नकार आता है तो बुरा भी नहीं। Not one easily answered. अरे नहीं, उससे मत खोलिए। आप देखिए कि आपका बेटा डिस्कस करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मेरे घर के सामने 15 दिन कोनो भी सिगरेट पीना। उस वक्त आपकी कार को आगे देखा, उसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंकी और फिर उस सिगरेट को पैसे निकाल दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बच्चों की तरह चबाने लगा। फिर आपके पास पहुंचा, बदबू को छुपाने के लिए उसने तुलसी वह बुद्ध मंदिर, लॉर्ड बुद्ध की साथ एक हाथ लेकर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ जानते हो क्या मतलब क्या? बहुत पेट में नहीं रखी तो सीधा हाथ आपका बेटा इस तरह से बात समझाना जानता है। एक बार में छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं इतना भी बाहर नहीं। मुझे ऊटी में एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझे वहाँ सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया, प्लीज उसे उसके साय से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है। बॉडी पर तो झुर्रियां है, टकला भी हो गया है, तो वो घर पर रही है। बाहर तो उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कांदा, वो पका हुआ आग कभी भी टपक सकता है। किसी और को नहीं ढूंढती। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर है। पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ कि बुढ़े से तलाक ले ले। घर के अंदर घर के बाहर। किसी के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। अरे सूख जाएगा जरा। जी बाबू, तुम जयप्रकाश अंकल को जानते हो ना? कुछ याद है तुम्हें? IAS में जिन्होंने बॉडी को बेचा है। हाँ, उनके बेटे आपके चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देखो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे।
तुम्हारी रजामंदी जरूरी नहीं है। आप टेंशन क्यों लेते हो भैया? अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। हाँ काफी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। ये तो रिजेक्टेड पीस है ना? Submerged in the lore for generations until आप इतने गुस्से में क्यों? कहते हैं लड़की का अप्रूवल चाहिए। क्या कमी है तुम्हें? बस आंखें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना आंखों में आंखें डाले प्यार नहीं होता क्या? सलमान खान तो मिस्टर परफेक्ट है, उसकी शादी हुई। गाड़ी क्यों? कहाँ? नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी एनजीओ से होगी, काहे के एनजीओ, म्यूनिसिपालिटी से। म्यूनिसिपालिटी में नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे दादी विरोधी पार्टी की। चाचू, लगता है साफ सफाई से बहुत नाम कमाया। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला गना। कहाँ गया? लड़की की तरह सुना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली भेंट कर। हम कौन से रॉयल? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना चाचू। मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर दिया। वो केस के पेपर से एक दो तीन। but he was loved by everyone. बात है सिंपल। I love you. He was the only one they gifted with this. आपको मुझे प्रोफाइल पता है? I wonder if the Giants left a trip ticket with me somewhere. आप लोग पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है? लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो। सदा सुखी रहो। I know how to read, boy. कुछ घुसा भेजे में। आप उन्हें इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। हाँ, हमारी सोच से तुम्हें इंटरेस्ट जाग जाए। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओ। दिन रात मेरे बारे में मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस भी निकालोगे। दौड़ कर कराओगे, दरवाजा खोलोगे, साउथ फिल्मों के डायलॉग पर वरना टक्का डालूंगी। That your father's doing? Or did you get it from your mum? She's stupid and ugly. आपके पापा की वजह से हम मिनिस्टर बना। That's true. But I'm gonna get to know you really well. You're gonna be my new brother. Right after I finish killing your father! Whoops! I think I broke him. No. Stay back! No! No! This isn't over! Brother, the boy. Atreus.
You have to get into Freya quickly. There's no other way. तो तूने ये किया हाँ सर अकेले से ग्रुप में अकेले कैसे अबे तो मारा क्यों क्या नाम है वो मेरे पास तेरा इतनी कुछ सुनने के लिए तुम नहीं है मेरा कीमती टाइम खराब कर तो मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा अरे बोला बाय Isn't far. मर गई तो दफना दे दे अगर कोई नेक काम करे तो न्यूज पेपर को लास्ट पेज में छोटा सा छापेंगे लेकिन अगर कोई लड़की को छेड़ दे तो बार बार न्यूज पर टेलीकास्ट करेंगे और उसे हिंदुस्तान के ब्लॉकबस्टर न्यूज बना देंगे और उसे बार बार दिखाकर इंटरनेशनल न्यूज बना देंगे एक जमाना था जब आप परिवार के साथ न्यूज पूछ सकते Odin's eye is on you, God. Especially now that he's taken to King as king. सुना है विजयवाड़ा में तुम्हारे 300 एकड़ का जमीन This is our smartest move. And if anyone can deal in, it's तुम्हारा काम I've seen it in mortals, some conflict of the mind expressing itself as an ailment of the body. God believing himself mortal. Only mortal. We're almost there. बहुत दूर से हॉस्पिटल रात को दवाई लेने निकले थे वो क्या देख करके मार दिया जालिमों को सजा मिले मेरे बेटे तो नहीं आए का कानून पर भरोसा करेगा इस केस में मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगी आपको न्याय जरूर मिलेगा आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो भी यही करते इसमें वक्त लॉयर को फोन की और इस केस से जुड़े सारे एविडेंस इकट्ठे किए चोरी करने वाले को सजा नहीं हो जाती Somebody just called the serpent. सब ठीक ठाक हो गया ना हो गया एकदम स्मूथ वहाँ हमारा वेलकम एकदम अद्भुत You're shaking. Be serious. We must hurry. लड़की सच देखो मेरे सामने बहुत प्यारी पापा Open the door! We need your help! Woman, do you hear me? It is urgent! I'm still a god! Go away! The boy has fallen ill! I'm still a god! Go away! Inside. This is no ordinary image. मेरे पोते The को तो boy's पैदा true मार nature, दिया your true nature fights the good. भाई लक्ष्मी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अच्छा ये बता तुम काम क्या करते हो वैसे कुछ खास नहीं हाँ हर रोज 2 झगड़े जरूर करता हूँ इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कमाते मुझे कमाने की क्या जरूरत है शराब और जुए के लिए पैसे घर से मिल जाते हैं मैं बेकार मेहनत क्यों करूँ इनकम टैक्स का टेंशन क्यों इसका मतलब तुम एक नंबर की मिठाई हो हाँ 100% और झगड़ा करना है तुम्हारा जॉब हाँ सिर्फ शौक जॉब
कोई बेवकूफ भी ऐसे यूजलेस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा। Fire, बिल्कुल सही पहचाना उसने। no magic वो in ऐसे all the 9 realms can create a blaze. As for the मैंने तो पहले ही कहा your था frost ये लड़की को axes will देखने be जाएगा, useless. लड़की उसे रिजेक्ट You'll need to करेगी, find अगली something नाटक else. बात आएगा। गणेश के लिए तेरी मोटी बहन राधा कैसे रहेगी? लड़के तंदुरुस्त है, जोड़ी खूब मेरी जमेगी। बहन एक कलिया की धरती पर बोझ। मैं अपनी बहन को इस सड़क पे रोने नहीं दूंगी, ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, समझे? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। इसमें कमी क्या है? ऑल इन वन है ये। तो किसी की परवाह मत कर बेटा, एक गई 50 मिलेंगी। उससे भी सुंदर ढूंढना, उसे भूल जा। एक नंबर की चुड़ैल थी वो। प्रॉमिस कर तू मेरे लिए अप्सरा जैसे बहू लेकर आएगा। काली चलेगी पर मोटी मत लाना। Do not under any circumstances cross the bridge of the dead. There is no road back. Understand? गाना, ये दुनिया वाले चाहे माने या ना माने, You must लेकिन hurry. तुम बातें किए थे। Through my garden there's a कब पता passage चला? to my boat. Take लड़के it. देखने वाली ब्यूटी का आने के बाद Dig up your past. अगर Whatever सच you need कहता to है, do. तो वो झाड़ू से मार। अरे ये कौन सी जगह? कितने झूठे हैं? एमएलए का घर है, भीड़ तो होगा। ये झाड़ू वाली का घर। अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं। तूने मुझे शहीद करने का सोचा नहीं तो मरना है। You were right to distrust the word of a god. No need to explain. ये डर क्या रहा? I will keep you समझ नहीं समझ। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया। गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान, कभी अपनी पिक्चर देखी तुमने? नहीं, तो अपना नंबर देखा? नो, दिल तो देखा ही होगा। नहीं, अपना दिल नहीं देखा, तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखा? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक स्कूल में जाते थे, खाने में खाते थे। जावेद भाई, मैडम, उसे अंदर आने दो, रोको मत, आ जाओ। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझा दो? आप दोनों साथ भी करते हैं, बहुत आगे जाएगा। एक ही प्लेट में खाते हैं, इसे बेड पर सोते थे ना? ये कब हुआ बे? क्या है? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तो है कौन बे? करना समझिए, एमएलए हूँ। हाथ दोनों चलाती है। हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुसको मत। तो जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो है। हम दोनों की लव अफेयर का क्या हुआ? मैं हाँ समझूं। सच याद है क्या? अपन एमएलए तो दिल नहीं है? एमएलए को दिल नहीं होता? तो अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपनी लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू? सिंपल लॉजिक। किसी और मेरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हमारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं होता। मान लो बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, तो बिना दूध के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पर इतना खर्चा कौन करे? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पर कोई ट्राई नहीं करे। और खुद को देख लो, तुम तो एक एमएलए हो। 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड, लाल बत्ती की गाड़ी, किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी गोली में गिरोगी। नो कॉम्पिटिशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी। उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। Get out of my head. हेलो, मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी। अगर इसे करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। पागल हो गई है क्या? लेकर आई क्या? सामने भाभी इतना ठंडा रहने का माहौल देखा है जो लुटा रही है। इडली में सांबार, ब्रेड में सांबार, चपाती में सांबार, सांबार की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, मिर्ची लगा रहेगा। अगर सांबार की ना होगी तो और अच्छा हो जाए। हटे हराम, क्या देख के लाया सारे तू इसको? इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना।
अरे ये कैसे? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत है? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। नहीं, ये सिम किसके नाम पे है? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफकोर्स आपको। इस राज्य के IAS IPS ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करता है सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक SP ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आपको शादी से है। ये सब आपको शोभा नहीं देती। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी सब क्या रह गई? कौन है बंदा? हमारे एरिया के अरे इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली। मुझे तो सीधा असेंबली में जाके रखा डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। चुप कर। तुम मैसेजेस का क्या मतलब? ऐसे मैसेजेस पापा। 1 2 3 टुडे आई एम फ्री 4 5 6 दिल है तुम पर 6 उनको से कॉपी मारा दो। बेवा खिलाऊंगा, बेवा ना मिला तो आज लिखा बक्कर बक्कर मुझे 80-90 सोने खाओ। ये क्या बात है? अब एक्सेप्ट करो। आपको ये बताओ तुम कब करो? तुम कब करो? तो मैं कर रहा है। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली। मेले से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। घूमेंगे ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी दी, राशन से लेकर बाजार तक सब कुछ मिलेगा। इज्जत की खुशी नीलाम हो जाए। क्या बकवास वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को तारना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन उसके पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है, वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूजन्ति समथिंग समथिंग देवता। इसका अर्थ जानते हो बांगड़ी? लड़की को पूजा देकर राखी बांध देगी, पटाओगे तो शादी करने की जरूरत है अंकल। बाप रे कमाल से है। उसके लाइफ में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी मैं उतना भी महान नहीं। मैंने ऊटी में खूटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया। मेरे सामने आके कितनी खाना है? क्या हो गया? ऐसे तक देख रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। कई टकलू आया है ना, ऐसा मत बोल। मेरे लिए तो वो आज से नहीं जबरदस्ती तो लगता है। अभी कुछ मिनट हो जाएगी, खाना बनाएगी, वो खाना खा के खराटे मारते हो जाएगा। अब बुढ़ाऊ से उम्मीद क्या करेगी? जवानी बर्बाद करेगी। मेरी बुराई कर करके और मोटी होगी। बदमाश अब घर चले। पाइपलाइन के लिए आप जरूर टेंशन कर पाए। अब आपको पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मैट्रो का काम भी जल्द शुरू होगा। मैडम की लड़कियों के साथ मीटिंग है। आप लोग क्या करते हैं? मैडम आई लव यू। मैं आपका सच्चा फैन हूँ मैडम। आपके लिए फूल लेकर आया हूँ। सारे काम साथ में करते हैं। विशेष बात आने दो। आपको क्या मेरा फैन है? हाँ सही करिए। मैं एक फैन हूँ। आप तो जाइए मैडम, बाहर है। डालो। क्या नाम है? गणेश। करते क्या हो? मैं बता रहा हूँ। तुम्हें लगता है क्या है फ्रैंक हो? तो बचपन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था। क्या था? तुम बचपन में क्यों नहीं मिली मुझे? कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्यों? तुम वोट मांगने हमारे आगे पीछे नहीं घूमते? अपने इंटरेस्ट की बात है, डिमांड एंड सप्लाई। ओह, तेरे एक वोट से जीतूं क्या बिसाने? एक वोट से खड़ा करता है। भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था। मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में। शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीत में आई थी ना? हाँ तो क्या? तुमने कहा क्या नागरिक को आ जाना? कहाँ होगा? कहा था तुम सब ये हो? कहा था ना? हाँ तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। अरे तो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सब मैं नहीं जानता, मैंने तो पर्सनली ले लिया ना। तो देख रहे हो बाद में देखी साथ में चला अरे एमएलए मैडम, आई लव यू। जब तक तुम मरे कुछ आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। मार डालो।
मेरा आज का काम खत्म हो गया। चले उस पर केस करेगा और नहीं पर करेगा। हाँ, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? अब ये भी कोई बात नहीं। अरे भाई की चोरी पर केस हो सकता है, उसने तो मेरा दिल चुरा लिया। तो पता ही है मेरा नाम नहीं होता। और मेरा देश चल ये मामला क्या है? फाइनल हियरिंग होने जा रही है। जनता महिला को सपोर्ट करने के लिए अदालत से बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अदालत रेंजर को सजा देती है या केस को बाइफर बरी करती है। तो फिर रेंजर और बिजनेसमैन का साथ मार्च देते हैं। मैडम, हमारे वकील साहब अभी तक नहीं है। मैंने सुबह से उनको कई फोन किए, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। उनके घर पे भी ताला लगा। रिश्तेदारों को तो इनके बारे में कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैडम वो कहाँ चले गए। Well, I'm pretty sure you weren't talking to me back then. Anything you'd like to get off your chest, brother? You're likely to see a 15-alcohol sun gel with 1% hyaluronic complex active sun protection and water light hydration. Well, you know where to find me. And for the record, I've already guessed you. Athena? Hey, you reeked of foreign magic. My brother and me. What are those? I've never seen the like. That's gotta be a family heirloom. No. Nor will it ever be. Son, my brother and me created me own heirloom. I know from quality. तो आपकी तरफ से एविडेंस कौन पेश करेगा? सारे एविडेंस लाए के पास है साहब। और तो एविडेंस करेंगे। इस तरह आप कोर्ट का केस के वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए मैं इस केस को डिसमिस। एक्सक्यूज मी सर। The fault is mine. हमें लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कीजिए। मैं इसकी अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता। चाचा उठो। केस आप लड़ें। जाओ। डिसाइड हो गया। चलो। ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो। तुम शुरू कैसे करोगे? ये तो सक्सेस मांगो और एविडेंस देखे। एविडेंस। अच्छा। सबूत और गवाह लाना मेरा काम। चलो। So where are you off to in such a Your Honor, hurry? मेरा नाम स्टीफन है। ये केस मैं टेक ओवर करता हूँ। Shit, this is serious. लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट है। आपके पास कोई एविडेंस है? किस बिना पे लड़ेंगे आप? इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, गिरफ्तार दो, फांसी दो, गिरफ्तार बलात्कारी है, गिरफ्तार दो, फांसी दो। खामोश। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किसी भी केस में क्या चाहिए? सबूत और गवाह चाहिए। न्याय मिलेगा, मगर कब? जब गुनाह साबित हो। लेकिन अखबार में हेडलाइन छपने से या किसी न्यूज चैनल के कहने से या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक एमएलए के सपोर्ट से केस का फैसला नहीं होता। जज साहब, जज साहब, रात को अगर रेप हो तो अगली सुबह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होगी। यहाँ भी जानते हैं। Freya's given you the chance to have life. It should be removed off the table. Yes, आप इसे रेप कह रहे हैं। जिस दिन रेप हुआ, she was 6 months pregnant. ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। उसे एक नहीं 10 बार होटल के रूम से कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था। ये बात बिल्कुल सच है सर। हमने उसे 10 बार अरेस्ट किया, लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके माँ बाप को ना बताएं, इसलिए एक ही बार कंप्लेंट की। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरी बेटी को खुद पर ऐसे चीजों में इल्जाम मत लगाइए। आपसे भीख मांगता हूँ, बहुत अच्छी थी मेरी बेटी। हमने केस वापस ले लिया। और तुम्हारे कहने से नहीं चलता। आपने देखा जैसा, जब राज खुलने लगा तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। इन्हें फंसाने के पीछे इनका एक खास मोटिव था। मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी का आइकॉन। पूरी फैमिली ने मिलकर
मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने का, लूटने का प्लान बनाया, और जब वो झांसे में नहीं आया तो हर सुबह हर शाम रेप केस करने की धमकी दे देकर मेरे क्लाइंट को हैरेस किया। इनकी बेटी धंधा करती थी, वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। सारे एविडेंस भी यही कहते हैं, और ये ना सिर्फ मेरा दावा है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। समाज के नाम पर गलत नहीं रही, और किसे पता, शायद इसके माँ बाप कहीं से इस्लाम में झोंकाओ, इस शहर की गंदगी है ये। ऐसे लोगों को एक समाज में रहने का कोई हक नहीं है साहब। Let me take this moment to tell you that what you're about to do is दूसरा कीमती वक्त बर्बाद करने और एक निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगाने के बदले ये कोर्ट आपको दोषी मानता है। No, we're still in the realm travel bridge. We're after the bridge of the damned. The dead use it to cross into their permanent home, the city of Hellbourne. The bridgekeeper is minding the mission. He's the one we want. Follow this bridge. Should lead us straight to him. I really hope never to see this place again. I really hope never to see this place Use the fire of your blades to burn away that hell's bramble blocking the path. चाचा, चलो जल्दी करो। चाचा, चाचा गाड़ी स्टार्ट करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। जल्दी करो। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो मर चुके। वो मर चुके। For many reasons we went back for those blades. वकील साहब, मीना के पेरेंट्स ने सुसाइड कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट का फैसला करेगा? जज को क्या औकात जो हमारे खिलाफ फैसला दे? जैसे वाले कानून को अपनी जेब में रखते हैं। आपने जज को खरीद लिया। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? चाचा उसने अभी क्या बोला था? धनुष के आदमी समझा? मैं कह रहा हूँ कि धनुष क्या? इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये धनुष के आदमी है। केस तो जीत चुके। अब क्यों आए हुए हैं? आपने जमीन के जो पेपर्स मांगे थे वो मैं दिया। एक कॉपी ले आओ। आओ मेरे पास। बातों को बजा सकते हैं। मेरा बहुत नहीं करेगा। Only the really dead should be here. There's too many. The gate must be closed. And if the gate's closed, then it's Hey, my God. मुझे रेप करने का लाइसेंस मिल गया। Valkyrie to अब sort जो the तेरे problem. जुगाड़ तू कर। बाकी सब मैं संभालूंगा। Love you, brother. Enjoy. Hey, इसको टाइगर। सारे बच्चे डालो, कोर्ट को मैं संभाल लूंगा।
अगर कोर्ट करेगा तो मैं कौन था? बड़े दूसरे लगे रात को दुकान पे ज्यादा हो गए वही उतार मतलब रात में उतरेंगे क्यों गणेश शावर से उसके मॉइस्चराइजर के साथ जो त्वचा को बनाए मुलायम और नमन को नई दस दिन में डीजीपी रिटायर हुई है शाम को पार्टी दे अगर खास तौर पर तुम्हें साथ जाने को वहाँ पर तो छुट्टी हरकत मत करो कहीं नहीं पार्टी के नाम से तुमने लड्डू घोल रहा है When we killed the Reavers near my home, they came here. How did they return so quickly? Time doesn't move the same between all realms, especially where the spirit world is concerned. Like the light of Alfheim? The opposite, in fact. The Lake of Souls feels faster than Alfheim time, but Hell is much slower than Midgard. Sorry, I'm sure that's confusing. If we will get back to my son all the sooner, that is good. Ah, aren't you a quick study? कोई बड़ी बात नहीं है पूरे कर दूंगा हमेशा करीबी होते हैं तुम्हारे पापा ने बताया आज जो किसी न किसी मुश्किल होती है सुबह ही तुमने उसे प्रोग्राम कर दिया क्या सब होता है तुम्हारे काम से खुश हूँ वो पहले में उसे कुछ सुना लेकिन तुम्हारी तुम कुछ नहीं कर सकते और वो बात उसके सिस्टम से जुड़े हुए तो प्रार्थना करने की वजह से अपन को इंसान मिलने से जरूरत है इसलिए मैं आया कोई बात नहीं करती हाँ क्या मुझे पता तो गलत कैसे तो चौक के साथ सिंध के समय में बाहर हुआ जाने करो Is it within hell? Oh, no. Valhalla is part of Asgard. Only the worthy dead go there. The warriors who die in glorious combat. Hell is for those who die in dishonor. And those dead of disease. इनविटेशन से आया यहाँ तो सही तीर का निशाना बनने आ गया Never too late to go out fighting, I तुम suppose. दिल लेकर घायल होने आ गए वैसे क्यों उदास से लगे कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात उसके पैर काट दी क्या पैर काट के अलग कर दी सुरेंद्र के पैर तुमने काटे उसके लिए कानून है सिस्टम है क्या कोर्ट है कानून उस लड़की को बचा पाया और उसके बेचारे माँ बाप उन्हें इंसाफ है तुम्हारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या चलो उनको छोड़ो तुम तो है नहीं तुमने क्या कर लिया खैर छोड़ो
जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊँ तो यही मेरा उसूल है। ऐसे ही जीता। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। मिलिट्री की ट्रेनिंग तो शुरू का बिल्कुल पक्का। और वो सब जान गए तो मार दो। 24 घंटे सीनियर सिटीजन के साथ घूमकर बोर नहीं होते? होते तो हूँ, पर करूँ तो क्या करूँ? तो चलो, तुम पागल हो क्या? वहाँ जाने के लिए पागल होना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है। सबकी तरह मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाए, घूमे फिरे, क्लबिंग करें, मेरा भी मन करता है। पर मैं कैमेले हूँ। तुम्हें कुछ बताता हूँ, कन्विंस हो जाओ तो चल, वरना आइडिया ड्रॉप कर। कैसा आइडिया? तुम्हारे दादा महान फ्रीडम फाइटर थे। 1922 में ब्रिटिश का जुल्म बढ़ने लगा तो उन्होंने गन उठा ली। सही शादीशुदा होते हुए भी बच्चे नहीं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में लगा दी। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उनके 4 बच्चे, मतलब दिन भर लड़ने के बावजूद रात को रोमांस के लिए टाइम निकाल लेते थे। अरे मेरे दादाजी ऐसे नहीं थे। तुम्हारी दादी जिंदा होती तो कन्विंस हो जाती। नहीं पे आ रही है। की पार्टी में तो तुम हमसे डरा ही क्या चाचा? अरे पापा से मिलने आए हैं? अरे तू आ गई? मेरे साथ चल। बाय अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटे? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास लाओ। आपको पधारे। अभी 1-1.5 मिनट पहले गणेश को मुंशी होने के दुख दे रहा था, बल्कि इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच गई थी। कल रात मेरे घर के सामने मूर्ति बैठी थी। बहुत तरक्की करेंगे तो मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीते। ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल, उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? इससे शादी कौन? वो मुझ पर छोड़ थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसको नहीं दी जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी? ये फुल टाइम बेरोजगार है, दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे। से कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सीधी असेंबली से आई है। हमारी बात कर यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं अगर सिलेक्ट कर दूँ तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके। मेरे को एक बात बता, सिलाई मेहंदी ब्यूटी का कोर्स करना था ना? ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? Actually, I was studying in Brazil. Suddenly, Dad expired. So, unexpectedly, I became pregnant. हाय हाय, इसका सामान किया तो इंग्लिश बकवास। रिश्वत नहीं लेती है क्या? नहीं लेते आंटी। माँ ने टिकट लगाई है। तुमसे का तो में चाय लगाते रहेगी। चाय बना लेती है। चाय उबाल लेते हैं। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। तो पहले ही तोड़ दी। हमेशा साड़ी पहनती है कि कभी 2 पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। सब कुछ ठीक है, तो एमएलए है ना, इतना खुली लाइट तो कैसे चलेगा? आंटी, ठीक है जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगे तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहू। हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरे साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बेयर पार्क होने का साले। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है। अंडरवर्ल्ड से भूल देता है। अंडरवर्ल्ड को अपने जीन्स की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस जॉन को। अगर 1 घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और 3rd डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे रोजा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया। पहले इससे निपटती हूँ फिर तुझसे। चल फोन रख दे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछना है आपको? और क्या पूछूंगी बहू? सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। सांप का जवाब दे। अंकल,
आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बात ये है अंकल, जब मेरे पापा सीएम बनने वाले थे तो उनकी अचानक मौत हो गई। सोसाइटी में सभी उसे बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए इज्जत मेरी भी करती है। एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट है अंकल। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का दिल अपने काम की वजह से जीतूं, ना कि किसी डर की वजह। लेकिन रमेश की शादी करने के बाद मैं भी इस बात की वजह से, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ अंकल। मेरे सभी शरीर वो मेरे साथ जिंदगी तो मंगेगा और वो वादा करे कि वो कभी नाटक नहीं करेगा। शादी के बंधन को असली बनाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। क्या वो मेरी बात मानेगा? ये रो, कुछ नहीं होगा। इसकी शर्त सुनो आपने। तुम खासम असिस्टेंट ज्यादा चांस है वैसा होगा। अरे ये तो क्या कह रहा है? वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। लड़ाई झगड़े को रखा ही क्या है? जल्दी से शादी कर लो, 2 बच्चे पैदा कर लो। ये ज्यादा बच्चे की मैं दादी बड़ा मजा आएगा। कुछ नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला। मुझे शादी नहीं करनी। अरे नहीं चाचा, अगर मिल सकते हैं इतने सारे अपाहिज पसंद है बड़े हैं। इतने सारे बुजुर्ग बेचारे हैं, लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तोड़ोगे तो भंग होगा। अब चलो प्रतिज्ञा लेने का समय हो गया है। ऊपर आइए। वाह पंडित जी, हलाल होने वाली बकरी को पहचान दो। एक्सपीरियंस है पूरे 25 साल का। मैं भी कोई आज पैदा नहीं हुआ हूँ। मुर्गी कब अंडा देगी, कहाँ देगी, सब पता है। उसको उबाला जाएगा या तला जाएगा या फिर ऑमलेट बनेगा, सब जानता हूँ। आप आइए आइए आओ आइए आइए। आजा आजा, शर्मा मत, नहीं तो पंडित खा जाएगा। आगे जाओ बेटा। अब मेरी बात कॉपी पेस्ट कीजिए। बोलिए। टुडे एंड फ्रॉम नाउ। आओ जरा देखिए। I need nothing more. You're set. Can't much linger here, right? Kratos. Zeus? My father. Your father was Zeus? That explains a lot. What is that place? Never go there. Understand? How is he here? That is not possible. It's just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. We should focus on getting back to your son. Cold. Real quick, give me your blades. Why? You said I'd help you and I aim to. Come on.
my equipment, you make those. Be right back. You don't suppose you make those, do you? Now they're ready for the winds of hell. Just target this magical glowing thing here with your blades and throw. Your target that way, so you're welcome, and I believe it. This place is cold enough to freeze a pair of pigeon eggs. I sometimes wonder if there was once some sort of accident in his brain. We have been away too long. सब समझ गया सब कुछ समझ गया अपने डर पर काबू रखो तुम मुझ पर भरोसा है ना देखो मेरी आंखों में देखो देखो मेरी तरफ देखो मैं चाहता हूँ दुनिया वालों को इसके काबिलों के बारे में पता चल जाए जरूर कर मैरिज में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए तभी लोगों को भी न्याय मिलेगा सही है इतना आसान है इसे तो और करवाना चाहिए जितना दर्द इसने लोगों को दिया है जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता मुझे चैन दिया इसने तो इतने पाप किए कि इसे लाश को भी जगह नहीं मिलेगी इसे कानून सजा देगा अरे कहाँ है इसने केस के तो 15 साल Sorry, brother. I'm still stuck on what I heard back there. This was your father? Not now. We should focus on getting out of hell. And with that, I cannot argue. I'll just contemplate that little nugget in silence. ठीक ही किया तुम बस ये बच्चा का इसमें बच गया और बुरी मौत मरेगा माई तुम मत तैयार हो जाएगा चलो
किसी अनजान व्यक्ति ने आज सुबह सीएम के बेटे धनुष पर जानलेवा हमला किया। इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक नहीं पता चल पाया है। हमले में सिक्योरिटी गार्ड भी घायल हुए हैं। अगर इस देश का बेटा ही सुरक्षित नहीं है तो सवाल यह है कि आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। इस हमले के पीछे किन लोगों का हाथ है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट फिलहाल अलर्ट है। मैंने उसने गेस्ट हाउस में घुस किस्मत अच्छी थी तो बच गई। अगर भागे पागल हो जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालना चाहिए। उसने दोबारा हमला किया तो आपको डर है कि वो मुझे मार देगा। अब जो भी होगा बस आपके बारे में चाहिए। वो कोई भी हो, मुझे बात कैसे बताया? वो मुझे जानता नहीं, डीजीपी से बात करता हूँ। धनुष अटैक केस में एक नया खुलासा हुआ है। तो डीजीपी ही मीडिया को इस केस के बारे में बताएंगे। सर उसे धनुष के साथ क्या हुआ था? के सामने मुझे पेश मत करेगा। वहाँ क्या हुआ था? मैं धनुष का बहुत बड़ा फैन, बेरोजगार हूँ, इसलिए मेरे पापा ने कहा कि धनुष से जाकर मिल लो। तो जॉब पाने की उम्मीद में मैं धनुष साहब के गेस्ट हाउस पहुँच गया था। धनुष ये क्या बोल रहा है? मैं वहाँ गया तो वो महान आदमी फ्रूट जूस पी रहा था। वाह क्या है कॉन्शियस लीडर। सोचा उनके पैर पकड़ने पर मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब उनकी फोटो टांग कर उस पर रोज फूल जरूर चढ़ाऊंगा। जॉब की बात की तो उस महान आदमी ने मेरी मर्जी पूछी। आई वाज स्टन्ड। पूछा कहाँ काम करूँ? हिताची में काम करोगे? मेड इन जापान। ड्रैगन कंपनी में काम करोगे? मेड इन चाइना। एप्पल में काम करना है? मेड इन अमेरिका। उन्होंने कहा जॉब करनी है तो दम की जरूरत नहीं है, ब्रांड को यहाँ रखते हैं, यहाँ मतलब यहाँ जेब में रखते हैं। मैं आपका फैन हो गया सर। और तभी टीवी सीरियल के बीच में आने वाले एडवर्टाइजमेंट की तरह पता नहीं कहाँ से कुछ गुंडे आ गए। क्या नजारा था। धनुष के एक एक आदमी की धुलाई की उन्होंने। और हाँ उनके कुछ आदमी एक जैसे कपड़े पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म की तरह। उनको तो उन्होंने कुत्ते जैसा मारा था। ऐसी फाइटिंग तो फिल्मों में भी नहीं होती है। बस पूरा पैसा वसूल हो गया सर। सारी दुनिया धनुष को एक बहादुर इंसान समझती है। सब गलत है सर। उस डरपोक ने तो उनके पैर पर गिरकर माफी मांग दो। माफी मारने से पहले नहीं मारूंगा। देखकर गुंडों का भी मूड ऑफ हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए। क्या तुम उन लोगों को देखकर पहचान सकते हो? पहचानने की जरूरत नहीं है, मैंने उनकी फोटोज खींची है ना। देखिए इन्होंने अटैक किया। Are you sure? 100% sure. सर कौन है ये लोग? इन लोगों ने धोया तुझे? इन लोगों को मैंने ही मारा है। क्या तुम इन लोगों का पता जानते हो? ये पास के गांव में रहते हैं। तो फिर चलो मेरे साथ चलो। अगर पुलिस को तेरी सच्चाई का पता चल गया तो दाल रोटी जेल के अंदर। क्या गेम खेला है? बस के तारीफ करना बंद करो और टीचर को फोन लगाओ। गणेश पुलिस को हमलावरों के ठिकाने पर ले जा रहा है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। ये पुलिस तो कुछ ज्यादा ही तेज है। लगता है खाकी और कैमरा दोनों मिले। ये प्लानिंग पहले से की हुई है। डीजीपी मिला हुआ है। ओबल रेड्डी को फोन लगा, उसे बोल वहां से जल्दी निकल जाए। फोन उठा।
सिस्टम और कानून अब थोड़ा मुश्किल है। पूरे राज्य में लोग सेम और उसके फादर को खड़ा कर रहे हैं और गुस्से में आकर प्रवेश को कहते हैं लोग दोनों के खिलाफ होते जा रहे हैं। सर पार्टी चीफ का फोन है। अरे पार्टी चीफ का दोनों शख्स ने उनका अरेस्ट वारंट को इशू कर दिया है। ऐसा करना सही तो होगा ना? देखिए सर, इतने साल देश की सेवा करके मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं कर सकता। पुलिस डिपार्टमेंट और पूरा सिस्टम मिलकर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपके बेटे ने इस राज्य के लोगों के पास इंसानी के अलावा कोई